Yes, और sir. The pages. ठीक के बाद लिखिए some important terms. some important terms में सबसे पहला लिखिएगा कंडक्टेंस. ठीक है, कंडक्टेंस में लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस. Rishita, we have just started. We can start writing. Yes, sir. यहीं से स्टार्ट किया बस. प्रॉपर्टी है. लेट कैसे हो गए आप? Sir, my watch is slow. I set it in the wrong time. Oh, okay. Property of a substance which gives an idea about the ease of flow of current, and it is measured as reciprocal of resistance. Reciprocal of resistance. So G, it is equal to 1 upon R, reciprocal of resistance. The unit for this is ohm inverse or mho or Siemens. I hope you guys are writing with me. Next B लिखिएगा. Conductivity. It is denoted by kappa. Conductivity, it is denoted by kappa. Just give me a second. kappa क्या होता है? Reciprocal of resistivity. Reciprocal of resistivity. Basically, kappa will be equal to 1 upon rho. ठीक है, रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट किया जाता है ना, 1 अपॉन रो. देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन देम. उस रिलेशनशिप को आपको याद रखना पड़ेगा. व्हाट आर द रिलेशनशिप्स बिटवीन कंडक्टेंस बाकी चीजों के बीच है ना, तो रिलेशनशिप्स. So you must know resistance, it is equal to rho into L by A. Rho into L by A. From here you can say that rho, it is equal to rho जो है ना, that will be equal to R into A by L. R into A by L. Now 1 upon rho will be equal to 1 upon R into L by A. ना, because we have done reciprocal of the left hand side, तो right hand side वाले को भी पूरा reciprocal कर देते हैं ना, तो 1 R will be 1 by R, A by L will be L upon A. From here you will get 1 upon rho, it is nothing but kappa, is equal to 1 upon R, it is conductance, that is G multiplied by L upon A. Now, what is L and what is A here? In electrochemical cell and in electrolytic cell, this L is the distance between electrodes in a cell. And what is A? A is the cross-sectional area. Cross-sectional area of electrode.
ठीक है. So for example, if I have a cell like this, suppose like this, we have the one electrode और एक इलेक्ट्रॉन आपके पास कुछ इस तरह से है. They are connected with wire, something like this. ठीक है. तो ध्यान से देखिएगा, इफ यू आर राइटिंग प्लीज डोंट राइट. ठीक है, प्लीज डोंट राइट. तो बेसिकली आपके पास जो लेंथ है ना इन दोनों के बीच का, दिस इज दी एल लेंथ. और ये जो एरिया होगा ना, दिस एरिया, जो मतलब which will be the face of a rectangle, face of a cuboid if you join the electrodes. ऐसे आपने अगर ज्वाइन कर दिया इलेक्ट्रोड्स को, तो जो फेस होगा ना इसका, दिस विल बी द एरिया. दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है. फाइन. अब देखिए, किसी भी एक सेल के लिए द लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी सेम. है ना, एक सेल में आपने की स्केल डाला, एक स्केल डाला, तो सारी चीजें कंसंट्रेशन वगैरह यू कैन चेंज ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट फॉर अ पर्टिकुलर सेल it will be the length of the distance between the electrodes and the cross section area will always be constant. That is why we call it cell constant. L upon A को cell constant कहते हैं ना. So write one point. Since L and A is constant for a cell, the value of L upon A is called cell constant G star. तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? kappa it is equal to G into G star. L by A को क्या लिख दिया आपने? G star, and kappa will be equal to G into G star. Raise your hand if you're done till here. इसका आगे लिखाते हैं. चलिए, राइट नेक्स्ट रिमार्क. देखिएगा, सेल कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of electrolyte. ठीक है, हर चीज थी. अब एक और चीज आती है, व्हाट इज कंडक्टिविटी. सिंस कंडक्टिविटी इज द कांस्टेंट, एक चीज आती है, व्हाट इज कंडक्टिविटी. तो ध्यान सुनिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द पॉइंट, उसके बाद फिर आपको हम एक्सप्लेन भी कर देंगे. प्लीज राइट द कंडक्टेंस offered by
a unit volume of conductor is called conductivity. ठीक है, क्या मतलब है इसका और समझाते हैं आपको ध्यान से देखिएगा. You know that kappa it is equal to G into L upon A. Basically, if you want to define any constant, तो फिर क्या करना पड़ता है, आप इस L को भी 1 कर लो और आप इस A को भी 1 कर लीजिए. ठीक है, तो लेंथ, that is the distance between the electrodes and the cross sectional area, both is equal to 1. So when this whole thing is equal to 1, the kappa will be equal to G. That means conductivity will be equal to conductance when L and A is equal to 1. समझ में आई? What did I say, Rishita and Zaina? Conductivity will be the conductance when L and A are 1. Can you repeat that? Conductivity will be the Conductance. same as conductance when L and A are. L and A are 1. Yes, Zaina? Conductivity will be equal to conductance when the Mhm. values of L and A are 1. है ना? कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी कंडक्टेंस है तब जब L और A क्या है. Now we will understand why it is unit volume. So I can explain this regarding a particular wire also. For example, this is a wire, है ना, और इसका 1 सेंटीमीटर आपने लिया, it's 1 centimeter, and this cross sectional area it is equal to 1 centimeter square. ठीक है, so this wire is in a cylindrical shape. Cylindrical shape का क्या होता है? What is the volume? Volume it is equal to pi r square h. This pi r square is nothing but the area of the base. This is the area of the base, which is equal to what? 1. What is the height of the cylinder? It is also 1. So we can say that when unit volume, है ना, 1 unit volume is present, उस unit volume of conductor में whatever the conductance is offered, that is conductivity. In terms of our electrodes, we know that this is our electrode, this is our electrode, और this आपके पास ये क्या है? 1 centimeter, and this area is also 1 centimeter. ये area कितना है? This area is 1 centimeter. Similarly, this area will also be what? 1 centimeter. अब इसका अगर हम क्यूब बनाएं, ठीक है, इसका अगर हम क्यूब बनाएं, तो यू नो दैट दिस ब्लू डिस्टेंस, this one is also what? This is also 1 centimeter, ना? So we have a length between the distance between it. It may not look like it, but it is 1 centimeter, ना? वो हम लोगों ने बताया. So what will be the volume inside this particular whatever we have imaginary lines made? The volume will be again what? 1 centimeter cube. ठीक है, so that is why we say that conductance offered by a unit volume conductor is called conductivity. समझ में आ गई बात? ये सुनो प्लीज सुनिए. Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात बताइए, when we have 1 centimeter cube, ठीक है, तो इस टाइम में जो कंडक्टेंस है दैट इज कापा. मेक सेंस? Yes, sir. इफ आई हैव Yes, वॉल्यूम 1 centimeter क्यूब, तो क्या आ जाता है? अच्छा, 1 centimeter का मतलब 1 ml होता है ना. दैट विल बी आल्सो व्हाट? 1 ml और 1 centimeter सेम चीज है. तो व्हाट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन? द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन. 2 ml का मतलब कितना हो जाएगा? 2k. 3 ml का मतलब क्या हो जाएगा? 3k. इफ आई हैव v ml, then it will be equal to v into kappa. Does that make sense? Yes or no, please tell me. Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट Yes. लिखिएगा. यू डोंट नीड टू राइट ऑल ऑफ दीस थिंग्स. आप एक पॉइंट लिखिएगा. So can you show the first point? I didn't write the whole thing. For 1 centimeter cube volume of solution, Done, sir. conductance it is equal to kappa. For v centimeter cube or v ml of solution,
conductance is equal to kappa multiplied by whatever the volume. हम क्या कह सकते हैं? Conductance it is equal to kappa into V. Now V should be in ml. Raise your hand if you're done. नेक्स्ट आपको एक और चीज समझिए, नेक्स्ट सिमिलर टू दिस इट इज मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी, है ना? मोलर कंडक्टेंस आई एम राइटिंग एनसीईआरटी में मोलर कंडक्टिविटी लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है, डोंट गेट स्केयर्ड. मोलर कंडक्टेंस इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम और कैपिटल लैम्डा एम. ठीक है, इस तरह से प्लीज राइट. व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? प्लीज राइट विथ मी. द कंडक्टिंग पावर of ions produced by 1 mole of electrolyte in a given volume of solution is called molar conductance. It's called molar conductance. पहले इसको लिखिए, raise your hand if you're done. Then I will explain the formula. Formula कैसे आएगा उसके बारे में बताता हूँ. Don't write this, है ना? Please don't write this. Molarity जो होती है, please try to understand. Don't write, है ना? Molarity is equal to, let us suppose 2 molar है ना, तो जितना ही मोलर होगा that is m mole per liter. Make sense? सुनो रिश्ता है ना, Yes, sir. Yes, है ना? sir. तो जैसे 2 moles per liter, 3 moles per liter, then what I can write? I can write m mole of solute in 1 liter of solution. Make sense? Yes, sir. So I can write m moles of solute in 1000 ml of solution. ठीक है ना? 1 liter को I have just changed to 1000. Now m moles था तो 2 moles in 1000 ml, 3 moles तो 3 molar होता तो 3 moles in 1000 ml. What about 1 mole of solute? If m mole is in 1000 ml, if m moles is in 1000 ml, then 1 mole of solute will be in 1000 upon m ml of solution. है ना? जैसे आपके पास मान लीजिए 4 मोलर था, so I will write 4 moles in 1 liter, है ना? और 1000 ml. तो 1 मोल कितने में आएगा? 1000 by 4 में आ जाएगा. Does that make sense? Yes or no? Please tell me, Rishita and Zaina. Yes, sir. ठीक है? So we know that lambda m जो होगा that will be equal to conductance. That is conductance में क्या होता है फॉर्मूला? Kappa into volume.
एक मोल का कंडक्टेंस, तो व्हाट इज विल बी द वॉल्यूम फॉर 1 मोल? द वॉल्यूम फॉर 1 मोल विल बी 1000 अपॉन m. ठीक है, तो द फॉर्मूला फॉर मोलर कंडक्टेंस इट बिकम्स lambda m is equal to kappa into 1000 divided by the molarity of the solution, capital M. So this is something that you have to memorize. If you want to write this part also, you can write it problem in that. लेकिन पहले समझना था, समझ लिए तो बहुत. Raise your hand if you're done. Waiting for Harsha and Harsha, no, Zaina. Just waiting for Zaina. Okay. Right, next, units of conductivity and molar conductivity. ठीक है, तो कापा क्या होता है? कापा इट इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू L अपॉन A. So for conductance I can write Siemens. For length I will write centimeter. For area I will write centimeter square. So centimeter and centimeter square will cancel each other. I will get the unit of kappa as Siemens per centimeter. What about molar conductance? For molar conductance I can write it is equal to kappa into 1000 divided by molarity. अच्छा, आपको अगर याद हो 1000 और इट वाज एक्चुअली 1000 ml, है ना? देखिए जरा, मेक सेंस? ये सुनो, Yes, sir. राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस विल बी, कापा के लिए आएगा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. दिस 1000 इट वाज ml या सेंटीमीटर क्यूब, राइट? So like multiplied by centimeter cube divide by molarity. मोलारिटी क्या होता है? एक सेकंड जरा रुकिएगा. यहाँ पे आपके पास ना दोनों ही चीजें, लीटर भी है और ml भी है. सी 1 लीटर को जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, 1 लीटर को जब हम 1000 ml लिखते हैं, ठीक है, तो कैसे लिखते हैं इसको देखिए जरा. 1 लीटर, ठीक है, ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया 1000, ठीक, और व्हाट एल्स यू कैन डू, ऊपर आपने किया 1000 मल्टीप्लाई, और साथ ही आपने किया यहाँ पे 10 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाई.
सेम थिंग, और फिर ये हो गया 1000 ml। ठीक है चलिए, ठीक है। कितने सेकेंड? कन्वर्जन फैक्टर में व्हेन यू हैव 1000 ml, इट बेसिकली मींस दैट यू आर हैविंग 1000 ml इन 1 लीटर। ठीक है, तो कन्वर्जन फैक्टर में ये चीज आती है, पता नहीं आपको याद है कि दैट इज व्हेन यू गो टू लाइक कन्वर्ट 1 लीटर को, तो 1 लीटर क्या होता है? 1000 ml अपॉन लीटर। ये है बेसिकली यहाँ पे 1000 ml अपॉन लीटर। दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे, आई विल राइट बोथ द थिंग्स। शायद हाँ, ठीक है चलिए देखते हैं एक बार। इसको अभी हम सेंटीमीटर क्यूब की तरह रखते हैं अभी। सीमेंस पर सेंटीमीटर डिवाइड बाई मोलारिटी के लिए लिख देते हैं मोल पर लीटर, मल्टीप्लाइड बाई दिस 1000 के अंदर दोनों ही है, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन लीटर। 1000 ml इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। क्या से? हाँ ठीक। लीटर इनवर्स एंड लीटर कैंसिल ईच अदर हियर, और यहाँ पे आपके पास बचेगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस विल बी द यूनिट ऑफ लैम्डा एन। एक और यूनिट यहाँ पे आप लिख लीजिए, दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू, सेम थिंग विल ऑल्सो बी इक्वल टू 10⁻⁴ सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। बस आप सेंटी का मतलब 10⁻⁻² होता है, तो स्क्वायर कर दीजिएगा, तो इट विल बी 10⁻⁴ एंड देन यू विल गेट इट इन मीटर। दिस इज देयर इन एनसीईआरटी, बस इसमें इसे लिख लीजिए। रेज योर हैंड इफ यू डन टिल हियर। वेटिंग फॉर हर्षा। राइट नेक्स्ट नोट। देखिएगा, इफ solution is given in grams per liter, बेसिकली इसको सॉल्युबिलिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी अगर दिया हुआ है या फिर सॉल्युबिलिटी आपको पूछा, वैसे से अगर कुछ है ना, देन हाउ कैन यू चेंज दिस टू मोलारिटी एंड समथिंग लाइक दैट। तो देखिए ध्यान से, तो मोलारिटी इज व्हाट? मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट, है ना, इन 1 लीटर। तो मोल्स पर लीटर, व्हाट इज बेसिकली मोल्स? मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, और लीटर इनवर्स तो लीटर इनवर्स है। ठीक है, तो अगर मोलर मास को अगर भेज दें हम, आई विल गेट मोलारिटी इनटू मोलर मास इज इक्वल टू द गिवन मास। गिवन मास कितने होगा? ग्राम्स में, और लीटर इनवर्स तो लीटर इनवर्स, है ना। तो ये तो सॉल्युबिलिटी आ गया, राइट। So I can say that molarity, it is equal to grams per liter upon molar mass, which will be equal to solubility upon molar mass. ठीक है, now I can write the formula lambda, it is equal to kappa into 1000 divided by molarity। ठीक है, तो मोलारिटी के बजाय क्या लिख सकते हैं हम लोग? कापा इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास डिवाइड बाई सॉल्युबिलिटी, ना। मोलारिटी की जगह सॉल्युबिलिटी अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास विल गो टू द न्यूमरेटर एंड यू विल गेट दिस मच अपॉन सॉल्युबिलिटी, विल बी द लैम्डा।
Raise your hand if you're done. Now we will do some questions. चलिए, write this question. आराम से सवाल को लिखिए, फिर स्वतः हम समझाते हैं. ठीक है, बट राइट द क्वेश्चन. While writing the question, you will understand a few things. आराम से लिखिए सवाल को लिखिए. Let me know once you're done writing the question, by the way. Waiting for Rishita. ठीक है, ठीक है. हाउ यू विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन, आराम से देखिए जरा, उसके बाद फिर लिखिएगा. ठीक है, डोंट राइट नाउ एनीथिंग. आराम से सुनिए फिर. ठीक है, तो स्टार्ट लाइक दिस. Resistance of a conductivity cell filled with 0.1 moles per liter KC solution. तो molarity दी हुई है आपको. Molarity is given as 0.1 moles per liter of KCl solution is 100 ohm. तो resistance दिया हुआ ना, ऐसे नहीं कि resistance is this much. Resistance of this cell is what? 100 ohm. So resistance क्या दिया हुआ? Resistance it is given as 100 ohm. If the resistance of the same cell, ठीक है, cell change नहीं किया हमने, that means length and A will be same. When filled with 0.0, अच्छा we have taken another solution. तो इसको M1 कर लेते हैं, इसको R1 कर लेते हैं.
M2 कर लेते हैं इसको हम, इट विल बी 0.02 moles per liter. ठीक है, अब KCL solution is 520 ohms, that means R2 it is equal to 520. Calculate the conductivity and molar conductivity. Calculate the conductivity kappa and molar conductivity lambda n of 0.02 moles per liter KCl. ठीक है, आपको सेकंड वाले का निकालना है. The conductivity of 0.1 moles per liter KCl solution, इसका conductivity दिया हुआ, that is kappa is given as how much? 0.1 meter कितना दिया हुआ था? 1.29 Siemens per meter. This will be equal to, I will change everything to centimeter because liter वगैरह है ना, लीटर को हम लोग सेंटीमीटर में ज्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे. ठीक है, so kappa 1 will be equal to what? 1.29 upon 100 centimeter. इसी क्या लिख सकते हैं? 1.29 into 10 to the power minus 2 centimeter. Does this make sense? Yes or no, please tell me. यहाँ तक समझ में आया? Outright all the data. Yes, sir. ठीक है. Now what they have asked? They have asked the kappa 2 and molar conductance for 0.02 molar KCl solution. This is being asked. तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना आपके पास, वी आर यूजिंग सेम सेल है ना, ये सेम सेल है ना, यहीं से आपका सवाल का जवाब आएगा. हाँ, ठीक है, तो प्लीज देखिए क्या करेंगे. हम लिख रहे हैं इसको, अभी आप मत लिखिएगा आप. ठीक है, सिंस ध्यान सुनिएगा, सिंस वी आर यूजिंग सेम सेल G star will be same. चाहे वो KCl solution it is whether it is 0.1 molar or it is 0.02 molar, the G star is not going to change because we are using the same cell. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? I can write G star 1, that means of the first solution, will be equal to the G star of the second solution. Now what is, by the way, G star को लिखना कैसे है? तो kappa, you know that it is equal to G into G star. So I can say that G star will be equal to G upon kappa. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. सही लिखा हमने? No, sir. उल्टा लिख दिया ना? कापा अपॉन जी होगा, सही है? कापा अपॉन जी, मेक सेंस नाउ? अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, कापा इंटू 1 अपॉन जी एंड 1 अपॉन जी. 1 अपॉन कंडक्टेंस इट इज व्हाट? टेल मी व्हाट 1 अपॉन कंडक्टेंस क्या होता है? 1 अपॉन कंडक्टेंस इज, बोलो, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ, Viti. कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ Resistance. रेजिस्टेंस. Resistivity. रेजिस्टेंस. कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, है ना? ठीक है, Yes, तो sir. आई कैन राइट अ फ्यू थिंग्स नाउ. जी सर 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? कापा 1 इंटू R1 इक्वल टू कापा 2 इंटू R2. ठीक है, और आपको क्या निकालना है? कापा 2 निकालना है. कापा 2 विल बी इक्वल टू कापा 1 इंटू R1 अपॉन R2, नीचे चला जाएगा R2. कापा 1 कितना है यहाँ पे? 1.29 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2. R1 कितना है? 100 अपॉन R2 कितना है? 520. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो 100 and 10 to the power minus 2 will be getting cancelled. We'll have 1.29, 1.29 upon 520. ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.3 अपॉन 520. सही है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 13 अपॉन 52 इंटू 100. देखो जरा, 520 का एक जीरो और आई एम रिमूविंग दिस डेसिमल, उसका एक जीरो, दोनों डिनोमिनेटर में आएगा ना? देखो जरा, नो 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 नो, बोलो. Yes, Six sir. still here. Now we can say 13. How much the 13 four का, which will be equal to what? 1 upon 4 into 100, 0.25 upon 100. तो हम क्या लिख सकते हैं? कापा 2 will be equal to
0.25 into 10 to the power -2 सीमेन पर सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया? हाँ या ना बताएं? Yes, sir. Copy this down. Raise your hand if you're done. Done, both of you? Rishita and Zaina? Yes, sir. Yes, sir. Oh, raise your hand if you're done ना। अभी थोड़ा सा बाकी है और आगे। राइट? क्या बाकी है? लैम्डा। लैम्डा कैलकुलेट आप लोग खुद से कीजिए। Molar conductance for the second solution will be equal to what? The kappa 2 multiplied by 1000 upon the molarity M2, है ना? हो जाएगा?
0.25 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power plus 3 divided by 0.02. कीजिए जरा, what would be the answer? जी हाँ, करेक्ट, वेरी गुड. 125 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. एक और सवाल कीजिए थोड़ा सा. A very small and simple question.
अरे you guys need to write this as 0 point, इसको आप लोग 0.025 लिखिए, ठीक है, एंड देन डू द कैलकुलेशन, अदरवाइज कितना टाइम लग जाएगा, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। Sir, can you once scroll up to the unit of molar conductivity? यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, Okay, sir. Sir, so the 10 raised to the power negative 4 we multiplied to the answer? नो नो यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई, कीप इट इन सीमेंस सेंटीमीटर, वो बस स्पेसिफिक उस केस के लिए है ना, अगर आपको सीधा सवाल आ जाए लाइक व्हाट इज द करेक्ट यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी और उसमें मीटर स्क्वायर वाला ऑप्शन सपोज, इफ यू ओनली हैव मीटर स्क्वायर वाला ऑप्शन देन उसमें क्या करना है, फाइन। Okay, sir. हाँ ठीक है, 0 पॉइंट, हाँ ठीक है, 0.0248 का भी तो आप कर सकते थे, हाँ ठीक है, दैट इज करेक्ट, करेक्ट है, करेक्ट है। जैना, हर्षा व्हाट अबाउट, सॉरी ऋषिता व्हाट अबाउट यू, ये सवाल नहीं है ऋषिता? Yes, sir, I'm doing it. I'm at the last part of the calculation. One second. कैसे कैलकुलेट करो, तो टाइम लग रहा है, सिर्फ 2 से तो डिवाइड करना है ना। Almost, I think I got 125, sir. हाँ ठीक है, चलेगा, सही है। कापा इज 0.0248 भी अगर हम ले लें, मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 0.20 को व्हाट कैन यू राइट, 2/10, so this will be equal to what, 0.0248 multiplied by 10 to the power 1 to 3, and 10 will go above, it will become 4, so you can write divide by 2 बचा हुआ है बस, you can write this as 1 decimal, 2 decimal, 3 decimal, 4 decimal, 248 divided by 2 will be 124 exactly, single centimeter square per mole. ठीक है, बढ़े आगे, कैन आई मूव ऑन? हाँ जी बताइए, जल्दी बताइए, अक्षिता, जायना, Yes, डन sir. ना? Yes, sir. राइट, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन जी, कापा एंड लैम्डा, ठीक है। नंबर 1 फॉर कंडक्टेंस, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, ज्यादा पानी ऐड करना, पानी ज्यादा करना, ठीक है। So you knew that conductance G, it is equal to kappa multiplied by volume. So on dilution, what is going to happen? The volume will increase, right? So as G is directly proportional to volume, then what will happen? G will increase on increase in volume. Okay. So what I can say, conductance, that is G, conductance increases with dilution. That means G is directly proportional to dilution. I hope you're writing with me. Second is conductivity.
ठीक है, एज देखिएगा कंडक्टिविटी वाला इंपॉर्टेंट है। एज kappa depends on number of ions in 1 centimeter cube वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना ज्यादा आयन होगा उतनी ही कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बट इफ यू आर गोइंग टू डाइल्यूट इट, तो द सेम अमाउंट विल बी प्रेजेंट इन लार्ज वॉल्यूम, है ना। जब आप पानी डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, द सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, द सेम नंबर ऑफ आयंस इज प्रेजेंट इन लार्जर वॉल्यूम। तो जो पहले 1 सेंटीमीटर में था वो अब 10 सेंटीमीटर में होगा, तो 1 सेंटीमीटर में कम हो गया, है ना। वॉट एवर, फॉर एग्जाम्पल यू हैड 50 मोल्स इन 1 सेंटीमीटर, आपने पानी ऐड कर दिया, अब इन ईच सेंटीमीटर क्यूब यू हैव ओनली 10 ml, यू हैव ओनली 10 आयंस, तो क्या होगी, कम होगी, तो कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। यू कैन राइट नेक्स्ट एज द नंबर ऑफ आयंस as the number of ions decreases on dilution, number of ions per centimeter cube, decreases on dilution, the conductivity will also decrease. The conductivity will also decrease. Meaning we can say that kappa it is directly proportional to molarity. जितनी ज्यादा molarity होगी उतनी ज्यादा conductivity होगी, and it is inversely proportional to dilution. So for the first one, will it increase? Like it will increase, right? Yeah, correct, correct. Yeah, it is going to increase on dilution. It increases with dilution. Yeah. So No, not that side. In the second one, the first point we haven't. I thought it was incomplete. what, Tushita? क्या कह रहे हैं आप? For the second, for conductivity, the first point, as kappa depends on number of ions in 1 centimeter cube volume, what it does it increase or decrease? नहीं, ये इनकम्प्लीट है। एज दी कापा डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ये फुल स्टॉप नहीं थे, एंड से स्टार्ट होगा, एंड द नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, यहाँ से ठीक है, Okay. इन कंटिन्यू। इस तरह से कभी थर्ड इज मोलर कंडक्टिविटी। डन टिल हियर Rishita? Yes, sir. देखिए मोलर कंडक्टिविटी में, देखिए मोलर कंडक्टिविटी में ना वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू मोर फैक्टर्स, है ना। डाइल्यूशन के अलावा भी एक दो चीज हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ए पार्ट दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में आसान है, वी हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा ज्यादा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कम होगा, है ना। तो लैम्डा एन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ग्रेटर देन वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा आयंस होते हैं, दे डिसोसिएट मोर इजीली, है ना, उसमें 100% डिसोसिएशन हो जाता है। ओके, यस ना जस्ट Yes, thank you, sir.
due to more dissociation in strong electrolyte. I'm saying SE, strong electrolyte. B part that we will discuss, nature of electrolyte के बाद है, size of ion. ठीक है, size of ion. So you can write smaller ions will have greater molar conductivity. ठीक है, C part लिखिएगा temperature. As temperature increases, as temperature increases, interionic interaction will decrease. मतलब क्या है इसका, जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन रहता है ना, दोज इंटरैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्ट करता है वो कम हो जाएगा, राइट, बिकॉज द आयंस विल बी मूविंग वेरी फास्टली हियर एंड देयर. So what will happen as the temperature will increase, interionic interaction will decrease and mobility will increase. है ना, मूवमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, लीडिंग टू greater mobility and higher lambda n. Last point is C के बाद D point है concentration. Why depends on concentration? काफी आसान है, because we know that lambda n, which is equal to kappa into 1000 upon molarity. सही है, तो जब molarity पे देखिए जरा, it is inversely proportional. So we can say that lambda n, it is inversely proportional to molarity. Therefore, lambda m, it is directly proportional to dilution. ठीक है, अब दिस इज तो अंडरस्टैंडिंग बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, लेकिन इसको क्वालिटेटिवली कैसे समझ सकते हैं, प्लीज राइट. when solution is diluted, the lambda m of electrolyte increases as with as with as dissociation increases with dilution. Raise your hand if you're done till here. Okay. So what happens with dilution? What happens to lambda m? Tell me, guys. Rishita and Zaina. क्या होता है बताइए जरा. जब डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को तो लैम्डा एन इसमें इंक्रीज और डिक्रीज. Increase. It will increase. इंक्रीज. तो आप पानी डालते जाइए तो लैम्डा एन क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, ऐसे करता ही चला जाएगा क्या. टेल मी. No, sir. नहीं, मतलब देयर विल बी अ पॉइंट जब आपने, और जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव अ सॉल्यूशन, यू एडेड 1 mug ऑफ वाटर, देन द लैम्डा एन इंक्रीज. ठीक है, सिग्निफिकेंट जो मेजरेबल इंक्रीज, आपने और डाला और थोड़ा इंक्रीज करेगा, लेकिन ऑन सक्सेसिव एडिंग ऑफ वाटर द इंक्रीज विल गेट डिक्रीजिंग.
जो बढ़ रहा है चीज ना वो मतलब वो घटते चला जाएगा, मतलब इंक्रीज होगा वो किस तरह से होगा, मेक सेंस। पहले तो बहुत इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज करते 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 एक टाइम पे आके एक कांस्टेंट वैल्यू वो अप्रोच कर जाएगा। डज दैट मेक सेंस? यस नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नाउ एट दिस पॉइंट मतलब हमने क्या कर दिया है इसको, वी कॉल इट दैट वी हैव इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड दिस। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब इतना डाइल्यूट कर दो कि उसके बाद डाइल्यूट करने पे कोई इफेक्ट ना पड़े। नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन विल बी देयर आफ्टर यू हैव इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड। इतना डाइल्यूट कर दिया हमने कि लैम्डा एम इट अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू। इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिस मीन्स the solution is so dilute, solution is so dilute that lambda m attains a maximum value, a maximum value, और that is the limit of lambda m। तो उसको क्या बोल सकते हैं? लिमिटिंग वैल्यू, और लिमिटिंग वैल्यू उससे ज्यादा नहीं हो सकता, लिमिटिंग वैल्यू। एंड it does not increase, and it does not increase it does not increase on further dilution। The lambda m at infinite dilution is also known as limiting molar conductance। The molar conductance at infinite dilution is called as limiting molar conductance। ठीक है, एंड डिनोटेड बाय, आप इसको या तो लैम्डा ऐसे डिनोट करते हैं, और इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय इंफिनिटी साइन। ठीक है, और इफ यू आर यूजिंग कैपिटल लैम्डा तो कैपिटल लैम्डा नॉट एम और लैम्डा इंफिनिटी एम। तो व्हेन इट इज जीरो ना, नॉट जो है वो किसके लिए है? इट डिनोट्स जीरो कंसंट्रेशन ना। अगर आपने डाइल्यूट कर दिया तो जीरो डिनोट्स जीरो कंसंट्रेशन, इन्फिनाइट डिनोट्स इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो बोथ दीज थिंग्स आर यूज्ड। इन्फिनिटी भी यूज किया जाता है, जीरो भी यूज किया जाता है। कैपिटल लैम्डा और स्मॉल लैम्डा, यहीं तक लिखिए। वी विल एंड दिस क्लास हियर, and then we will talk about what happens to strong electrolyte and weak electrolyte when we dilute it infinitely, है ना? इसके बारे में पढ़ेंगे, and then all the last topic है। After that, you need to watch a recorded lecture on batteries, corrosion, इन सब चीज के ऊपर एक रिकॉर्डेड लेक्चर, आप उसी को देखिएगा, राइट? उसके लिए क्लास लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज देयर इज नो कंसेप्चुअल पार्ट इन दैट। वहाँ पे बेसिकली बैटरीज के बारे में है, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज है, उसके कुछ सवाल है, बट प्लीज वॉच दैट लेक्चर, दैट इज इंपॉर्टेंट।